Hello, Mm. Good evening, can you sir. hear me? Yeah. Yes, sir. Has everyone finished the exercise, quadratic equations? So not fully, but yeah, कल तक तो हो जाएगी मतलब आधी से ज्यादा हो गई है. What are the doubts, Yes, sir, I if have there one are? doubt. Let me tell you, sir. Sir, exercise 5B, third question. Third and fourth. बाकी हो गया. Sir, not fourth, third and sixth. Not fourth. Exercise fifth B, third and sixth. Yeah. If x square plus a plus, okay, if x square plus a minus b x plus 1 minus a minus b equal to 0, where a b are real. This is our equation. A b is real. Find values of a for which the equation has unequal real roots for all values of b. Okay, values of a for which unequal real roots for all values of p. Okay, so in this quadratic, we will say unequal real roots condition is d greater than 0. Yes, sir. D is greater than 0 implies a minus b whole square minus 4 times 1 minus a minus b is greater than 0. Hmm. Okay, Hmm. this has to be true for all values of b. Yes, sir. So you expand it, it will become a quadratic in itself. So you will A square say plus B square minus 2AB minus minus 4 plus 4A plus 4B. make it a quadratic in B, because B has, we know that B can be any real number. Hmm. So then you will get a condition on A, right? Make Yes, it a sir. quadratic in B. So B square plus 4 minus 2AB Okay. and plus A square plus 4A minus 4. Hmm. Is greater than 0. This is now a quadratic in B. Hmm. And in this quadratic, we know that B has to be all reals, right? So we can say that D is less than 0 for this Again, quadratic equation. D is less than 0 for this quadratic. So now you'll get only on A. So Yes, you'll sir. get 4 minus 2A whole square minus 4A square minus 16A plus 16 is less than 0. So you'll get 16 plus 4A square minus 2 into 2, 16A. Minus 4A square minus 16A plus 16 is less than 0. 4A square gets cancelled. You are getting minus 32A, or either say 32. So you're getting 32 is less than 32A. So A is greater than 1. And 1. Yes, sir. ये ये लास्ट वाला पार्ट नहीं कर पाया था मतलब ये दिमाग में नहीं आया था. Got it, sir. Those who have background noise, mute yourself. Not Aniket. तुम्हारी तरफ से तो नहीं आ रहा है शायद. Anyway, the point is you start with the condition for the original quadratic, then you get a expression with two variables, which could be written as a quadratic in A and quadratic in B. But we need to write it as a quadratic in B because the question is asking us for values of A.
So as soon as you do that, you will be able to get a discriminant in terms of A, which you will solve to get the answer. Okay. Question 6. Okay, let ABC be the sides of a triangle. 6 part A या 6 part B? सर A1 B तो हो गया. बी वाला पार्ट ज्यादा ट्रिकी है. मैंने अपने टाइम में किया था, काफी ट्रिकी है वो हो गया. तो एक बार सॉल्यूशन मैच कर लेता हूँ. सॉल्यूशन मैच कर लेते हो मतलब? ए बी सी बी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. बी वाला इज फार टफर देन ए वाला. आई डोंट नो. Anyway, it's fine. Let's do A. No two of them are equal and lambda belongs to real. No two sides are equal and lambda belongs to real. If the roots of equation x square plus 2 times plus 3 lambda is equal to 0 are real. You have to find the range of lambda. Okay. So first of all, they are sides of a triangle. So we already know A plus B is greater than C, B plus C is greater than A, C plus A is greater than B. This is triangle inequality. Okay. And Yes sir. all of the quantities have to be positive. A, B, C are all greater than 0. No two sides are equal. Lambda is real. Roots of this equation are real. So discriminant is greater than 0, equal to 0, greater than equal to. So you'll get 4 times A plus B plus C whole square minus 4 into 3 lambda. So 12 lambda AB plus BC plus CA is greater than equal to 0, right? So you have A plus Yes B sir. plus C whole square minus 3 lambda AB plus BC plus CA is greater than equal to 0. We have to find the range of lambda for which this happens. Okay, fine. So we'll solve for lambda here. We'll get A plus B plus C whole square divided by 3AB plus BC plus CA is greater than equal to lambda, right? Yes sir. Because we know all of this is positive, so we can divide and all. There's no issue. So we just have to find the maximum value of this. That will give us a conditional lambda, right? So now, okay, so now we have to think of how we will do that maxima condition. No two sides are equal and all. Hmm. So first of all, you can say A square plus B square plus C square plus 2 AB plus BC plus CA divided by 3 AB plus BC plus CA, right? Yes sir. तो डिवाइड करोगे तो 2/3 तो आ रहा है डायरेक्टली. 2/3 प्लस दिस क्वांटिटी, करेक्ट? Yes sir. So lambda is less than 2/3 plus something. So this something is positive. We have to estimate it, but we anyway know that lambda is less than equal to 2/3 plus Okay. something positive. Something. हाँ. अच्छा So then. let's see the options now, right? Yes So sir. lambda is less than 2/3 बोल रहे हैं. कोई ऑप्शन में ऐसा कुछ आ रहा है? 4/3 to 5/3 is obviously wrong. क्योंकि 2/3 से लेस देन होना चाहिए. वो wrong है.
D option तो is wrong. D option is wrong for sure, right? 1/3 से 5/3 हो सकता है, एंड 4/3 से भी कम हो सकता है। B and D are for sure wrong, हम्म। right? हम्म। So now we have to think of A and C. 1/3 to 5/3 and 4/3 से कम. We are getting lambda is less than 2/3. Okay, we have to estimate this. So we have to do something about it. So what we can do here. So AMGM most likely. So because these are positive quantities, we should be able to do AMGM if we try. हम्म। So let's a square plus b square अगर दो दो होते हैं अगर हाँ तो basically what you have to do is make a 2 on top and make a 6 on the denominator. Why? Because that will help me group this and say that this is greater than equal to a square. इसको कैसे लिख सकते हैं? This is equal to a square plus b square plus b square plus c square plus c square plus a square, right? 6ab plus And this part is greater than equal to 2ab. This part is greater than equal to 2bc. This part is greater than equal to 2ca by a and gn. And because a and b are not equal, we know that it is greater, not even equal. हम्म। So we know that this quantity will be greater than 2ab plus 2bc plus 2ca divided by 6ab plus bc plus ca, right? For sure. 1/3। So this यस is सर। basically greater than 1/3. So we are हाँ। getting lambda is less than equal to 2/3 plus this, but this is greater than 1/3. So lambda is less than equal to 3 2/3 plus। plus 1/3, so 1, right? हम्म। Correct. हम्म। So now that means which options are working now? 1/3 to 5/3 is gone now. हाँ, 1/3। लेकिन फोर बाई That's थ्री भी तो सर वो है ना, 1 से बड़ा। but it is saying less than, which is true. It is हम्म। saying less than. This part it is saying 1/3 to 5/3, right? 1/3 to 5/3 भी तो हो सकता है ना सर, ये 1/3 <1 है और फिर वो। आंसर क्या दिया हुआ है? देखता हूँ सर। सर ए पार्टी है 4/3 वाला। C is obviously wrong because it's the wrong interval. A part is a true statement, even if it is not accurately precise. 1/3 का तो हमें कंडीशन नहीं मिला ना सही सर। You are getting lambda is less than equal to 1. It is definitely going to be less than 4/3. 4/3। But C is wrong, B is wrong, D is wrong. Do you understand what I'm saying? यस सर। We are doing AMGM on this to estimate it. That's the main thing. Otherwise, you will be finding it difficult to make an estimate here. Even in the initial part only, you should have gotten 2/3 plus something. That eliminates two options. After that, you have to do some more steps to eliminate the last option. नहीं, वो एएमजी का सोचा नहीं ना सर, वो तो 2/3 प्लस में ही गया था। AMGM तो सोचोगे नहीं तो कैसे आएगा? हम्म। What's the next doubt, anyone? आदित्य, तुमने कितना किया है एक्सरसाइज? सर अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं किया मतलब कहाँ तक किया है? अभी सर मैंने अराउंड 14-15% किए हैं एक्सरसाइज करके। तो इतना स्लो प्रोग्रेस क्यों हो रहा है तुम्हारा? सर मैं जो कॉन्सेप्ट है ना थ्योरी के, जो वो बोल रहा हूँ सर मैं। क्या बोल रहे हो? जो कॉन्सेप्ट है ना सर उनको बोल रहा हूँ मैं, मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहा क्वेश्चन करते समय। कौन सा एक्स थियोरी का अप्लाई हम्म, नहीं कर पा रहा है?
यस सर। एंड सर थ्योरी भी भूल रहा हूँ सर। पढ़ोगे ही नहीं तो भूल ही जाओगे फिर। अगर कुछ पढ़ोगे नहीं तो भूल ही जाओगे। 3 वीक 4 वीक से तुम एक एक्सरसाइज तक नहीं पहुंच पाए हो, मतलब तुम डेली पढ़ते नहीं हो, डेफिनेटली भूल जाओगे। सर सीट्स से थ्योरी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है बहुत। मैंने अभी तक मतलब बुक से थ्योरी नहीं पढ़ी कभी। मैंने मना किया था बुक से पढ़ना। नो सर। तो बुक से क्यों नहीं पढ़े हो इतने दिन से? मतलब 10th तक मतलब लेक्चर से ही सब कुछ किया है। तो सर बुक से मतलब हैबिट नहीं है थ्योरी पढ़ने की। हैबिट बनाने का टाइम आ गया है, अगर हैबिट जल्दी नहीं बनाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। पढ़ के खुद से पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दुनिया भर में लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तुम्ही का तुम्हारा ही हैबिट नहीं है। सब लोग वैसे ही पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। यूट्यूब वीडियो से पढ़ना कोई नया तरीका तुमने जो डेवलप किया है वो नहीं चल पाएगा यहाँ पे। एनीवे, होमवर्क सर कर नहीं रहे हो कुछ और फिर बोल रहे हो कि क्लास कब होगी। तुम सुबह में मैसेज किया था ना क्लास कब होगी, तो तुमने क्लास के लिए तैयारी की है कुछ? नो सर। सर जैसे कि एरन के मॉड्यूल से थ्योरी मतलब थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर किसी बुक में डिटेल में दी है क्या? तुम्हारे पास कौन कौन सी बुक है? सर अभी तो एक भी नहीं है। और थ्योरी जब हम लोग ने डिस्कस किया था तो तुमने क्या पूछा था, क्या डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम क्या डाउट है तुम्हारा? सर मतलब मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है उससे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। थ्योरी भूल रहा हूँ, रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका क्या मतलब है बताओ ना। कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है? सर जितना भी मैंने पढ़ा है ना, वो मैं मतलब सही से मतलब कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस में। डेली मैक्सिमम पढ़ क्वेश्चन तो डेली सर। पढ़ोगे नहीं तो फिर कभी अप्लाई नहीं होगा। ये मैथ्स है, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तुम सोचोगे कि रैंडमली एक दिन पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े, वैसे करके करोगे तो कभी याद नहीं होगा थियरी, और कभी अप्लाई भी नहीं होगा। एनीवे, प्रैक्टिस करोगे तभी तुम डाउट पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो फिर आई विल आंसर अदर पीपल्स डाउट्स। कौन सा है रुद्रजीत, व्हाट इज द क्वेश्चन? 36 पार्ट ए, विच एक्सरसाइज? सर आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज में ही 36 क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज 36 क्वेश्चन। ओके, if half is less than equal to log base 0.1 x, then the maximum value of x. Okay, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। हम्म। अगर तुमको बेसिक थियरी पता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे? सर लॉग 0.1 को कन्वर्ट करना 1 माइनस लॉग 10x और फिर नहीं, डोमेन निकालना। सबसे पहला स्टेप ऑलवेज इज डोमेन। भाई, दिस इनइक्वालिटी को देखते साथ तुमको देखना है कि x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू विल से। आफ्टर दैट, why will I convert the log? Why can't I work with this base? I don't need to convert any bases. I ठीक है have two inequalities. Half is less than equal to log 0.1x and log 0.1x is less than equal to 2. The base is less than 1. What will happen to the inequality sign? दे विल फ्लिप। So you will say 0.1 to the power half here will be less than ki greater than x. ग्रेटर देन इक्वल टू x। And from here, what will I say? राइट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर।
तो इससे आंसर So नहीं आ रहा है। by x belongs to 1/100 to 1/√10. 1/10 का √10 हो गया वो, वन वही बाई वही रूट टेन ग्रेटर देन एक्स। और and यहाँ पे 100. एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/100, तो इससे So बड़ा x और इससे छोटा है। 1/100 टू say 1 by वन root बाई 10. रूट टेन Yeah, yeah. ABD options is. रुद्रजीत, इसमें डाउट क्या है? मुझे डाउट तो कुछ नहीं दिख रहा है। इनइक्वालिटीज में तुमको प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमको बेसिक जो हम लोग ने डिस्कस किया था तुमने ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे इनइक्वालिटीज में लॉग का साइन रिवर्स होता है, ये सब सब डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी क्लास में। व्हाट आर द अदर डाउट्स? So not for now. So कोई और अभी डाउट नहीं है? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दूंगा फिर। वन सेकंड। फाइंड द सम of the absolute values of the roots of x power 4 minus 4x cube minus 4x square plus 16x minus 8 equals 0. क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? hmm. सम ऑफ द रूट्स नहीं पूछा जा रहा है। इफ इट वाज सम ऑफ द रूट्स द क्वेश्चन इज डन। सर पे तो क्वेश्चन बनता ही नहीं ना. सम ऑफ द रूट्स इज हाउ मच? माइनस मतलब +4.
We need to find sum of the absolute value of the roots, which means mod of alpha plus mod of beta plus mod of gamma plus mod of delta. You have to try to somehow complete the square or somehow factorize it. If you cannot factorize this expression, it is impossible to get the roots, right? Because there is no formula for fourth degree equations, correct? Yes, sir. तो फैक्टराइजेशन करना है, कैसे फैक्टराइज करेंगे वही सोचना है. Focus on the first three terms. इसमें से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस -4x -4. x -4. हाँ. It would have been nice if it was a +4, right? Hmm. So what we will do is we'll force it to be a +4. And we'll subtract a -8x square. Hmm. That will immediately do what? यहाँ पे वो बन जाएगा x square into x minus 2 whole square. Hmm. और ये फर्स्ट थ्री टर्म्स हो गए, और यहाँ पे -8x square plus 16x minus 8, राइट? Hmm. जिसमें से तुम -8 कॉमन ले सकते हो. हाँ. तो ये ऐसा बन रहा है, यू आर गेटिंग. यहाँ पे इसको x को अंदर भी ले जा सकते हैं और एक परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? Hmm. x square minus 2x whole square minus 8 times x minus 1 whole square, राइट? Hmm. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x square minus 2x whole square minus 2√2 अंदर ले गए x minus 2√2 whole square. Yes, sir. Is everyone understanding what I'm saying? Yes, sir. Because now I have written it as a difference of two squares, I can obviously factorize it. Yes, sir. So I will say x square minus 2x plus 2√2x minus 2√2 multiplied by x square minus 2x minus 2√2x plus 2√2 +2 equal to equal to 0. 0. Hmm. This is a product of two quadratics whose roots can be found. Each of these you can actually intelligently find the factors, Hmm. or you can just simply directly use quadratic formula for both of them, right? Hmm. Find the roots, find the sum of the modulus of the roots. आंसर निकाल के लाओ. Okay. फैक्टराइजेशन हो गया.
आंसर है 2 + 2√2 + 2√3, फाइनल आंसर। It will come if you solve these quadratics and then take modulus of the roots and then add it up. If you are done with it, you need to do the next question, which is written here, question number 2. You have 5 minutes to think about it. Try the question. I'll be back in 5 minutes. Try the second question if you're done with the first one. ये आंसर आ रहा है किसी का? सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये वाला पिछला वाला आंसर आ रहा है। हाँ वो निकल गया सर, ये वाला बता दीजिएगा कि आपने लिखा एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड फिर एफ ऑफ एक्स एक लीनियर फंक्शन है जो एक्स ही है। तो क्या बोल रहे हो? लीनियर फंक्शन कहाँ से हो रहा है? सर आपने लिखा है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स।
पूरा सेंटेंस क्या है, बोलो तो पूरा सेंटेंस। सर f of x is equals to suppose that f of x equal to x has no real root. Prove that f of x is x also has no real root. ये तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स तुमको लीनियर कैसे दिख रहा है इक्वेशन? इसे मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ओके ओके, इसका ये मतलब है। अब हो जाएगा सर, बस 2 मिनट के लिए। ये तुमको एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन थोड़े दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट स्टेप में डिफाइन किया था। ये इक्वेशन बन रहा है, डेफिनेशन नहीं है। गॉट इट सर। इट इज नॉट सो इजी कि अब हो जाएगा, बहुत आसान नहीं है। एफ ऑफ एक्स अगर करोगे तो वो क्या बनेगा? ये इक्वेशन अगर लिखना चाहोगे तो कैसा इक्वेशन ये बनेगा ये? एफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस एक्स। हम्म। और इसमें एफ ऑफ एक्स के जगह पे ये डालना पड़ेगा, तो इट विल बी अ फोर्थ डिग्री। हम्म। दिस इक्वेशन इज नॉट अ नॉर्मल इक्वेशन, इट्स अ फोर्थ डिग्री इक्वेशन. What we know is that this equation has no real roots. Then we have to think about the fourth degree equation. So if you directly try to do it, it won't work. क्योंकि फोर्थ डिग्री का एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है. तो लेकिन यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को एक्स क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमने तो वही सपोज किया है। सपोज ये है, सपोज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है. सपोज दैट द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स हैज नो रियल रूट्स. मतलब तुमने तो कभी तुम ऐसा नहीं कर सकते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 2x पे इक्वेशन नहीं आ सकते, ये इक्वेशन नहीं बन सकता. फिर बन सकते हो। तो हम लोग ने सपोज किस सेंटेंस में किया था? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, दैट वाज द एफ ऑफ एक्स फंक्शन. इट वाज नॉट हाँ। एफ ऑफ एक्स वाज एक्स. देन वी आर सेइंग सपोज दैट द इक्वेशन. अच्छा, फिर हमें हर इसको दिखाने के हर एक्स के लिए ट्रू है। जो लास्ट वाला जो रिजल्ट है वो हर एक्स के लिए ट्रू है, वो दिखाना है ना। We have to say that if this equation has no real roots, prove that the equation f of x equals x also has no real roots. Since this is a fourth degree equation, directly you can't do anything. You don't have enough theory for fourth degree equations. We have to use this condition intelligently. Basically, what this condition says is that f of x is not equal to x for any real x, right?
correct? Yes, sir. What will that mean? If f All of roots x are is, real. hmm? All roots are? नहीं सर, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स के ना बराबर हो तो फिर रूट्स तो रियल होंगे ना। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। What we are saying is this equation is not true for any real x. From here, you can say that f of x is either greater than x for all real x, or f of x is less than x for all real x. Can't be equal to x because then it will have real roots, right? समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, क्या बड़ा होगा या छोटा होगा, यही दोनों पॉसिबिलिटी है सर। ओके, रुद्रजीत क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे? f of x is not equal to x for any value of x. Basically, what that means is f of 1 cannot be equal to 1, f of 2 cannot be equal to 2, f of 3 cannot be equal to 3. The reason is we have no real roots here. For any real number, f of 1 is not 1, f of 2 is not 2, f of 3 is not, and so on. So that automatically means that कोई भी x डालोगे तो f of x will be either bigger than x or f of x will be smaller than x for any real values of x. Is that clear? तो फिर अब यहां से अगर ये ट्रू है फॉर ऑल रियल एक्स, तो व्हाई डोंट यू डू f of x on both sides and here f of x? Can we do that? Both sides you are applying f function यस सर। for all real x, right? So as soon as you apply this function, now you can say that we already know that f of x is greater than x for all real x, right? So what does that tell us? That f of x is also greater than x, right? इससे आ रहा है कि if you apply f on both sides once more, f of x is also greater than f of x, which is greater than x. So f of x is greater than x. और सेकंड वाले हाँ कंडीशन सेम। से आ जाएगा कि एफ f ऑफ of एक्स x is less than x. हाँ So that will mean that ये equation f of x equal to x also cannot ever happen. हाँ Basically, it's a logical proof कि if f of x will never equal to x, then f of x will also be similarly bigger than f of x or smaller than f of x, which means that it is bigger than x or smaller than x, which means that this equation cannot have any real roots. Do you understand what is happening? Okay. Question number 3. Given that the equations x square plus p1x plus q1 is equal to 0 and x square plus p2x plus q2 equals to 0, where p1, p2, q1, q2 are real numbers.
These are two equations given to you, and you have to say that if 2 times of q1 plus q2 is equal to p1 p2, then show that at least one of the equations above has a real root. Two equations are given and one condition is given. You have to show that if this condition is true, then one of the equations has a real root. Discriminant of the first equation is p1 square minus 4q1, and discriminant of the second one is p2 square minus 4q2. Okay. Think of that and think of trying to use that. You have to prove that at least one of the root equations has a real root, which means one of them has to be greater than equal to 0 for it to have real roots. हो गया क्या कर रहे हो? सर ये इसको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ वन और डिस्क्रिमिनेंट को टू ऐड करेंगे You are adding them. अच्छा नहीं नहीं वो उसका हुआ है ठीक है P1 प्लस P2 ग्रेटर देन 0 है Yeah. नहीं सर रुकिए बस 2 मिनट सर हमें बस ये पता चला कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उसके बाद कैसे खत्म मैं तो हो उसके गया बाद फिर. सोच रहा हूँ बस सोच रहा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 अगर करोगे तो आ रहा है p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर माइनस हूँ 4 -2 टाइम्स. P1 हाँ भाई But then you तो can say that this is equal to this. So therefore, P1 माइनस P2 होल स्क्वायर which is greater than 0. तो Using वही the आ गया condition, we are getting that delta 1 plus delta 2 is greater than equal to 0. Is it possible for both of them to be negative now? नो सर तो वन ऑफ देम विल बी पॉजिटिव बस If the sum of the discriminants is positive, then it is guaranteed that वन both ऑफ देम इज cannot be पॉजिटिव negative. हाँ हो गया Both cannot be negative. That means both cannot have no real roots. हाँ तो एक So, के पास रियल रूट होना जरूरी है सर is everyone understanding what I'm saying? यस सर So, these types of questions can be asked
Like these are theoretical questions where you are supposed to prove things. So another question like this only is question 4. A, B, C belong to real. Prove that at least one of the equations x square plus a minus bx plus b minus c equals 0, x square plus b minus cx plus c minus a equals 0, and x square plus c minus ax plus a minus b equals 0. At least one of the equations has a real root. मतलब हैज रियल रूट्स या मतलब एक रूट होंगे, दोनों वही दोनों रियल होंगे, ठीक, गॉट इट, सॉरी सर। सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बस ये बता दीजिएगा सर। Geometric mean of what? Of A1 two and A2, numbers. यस सर। AB, ओके, Root AB. थैंक यू सर। तीनों का डिस्क्रिमिनेंट लिखो, डेल्टा 1 क्या है? उनका एडिशन सर, A² + B² + C²।
मतलब 2 इन अच्छा ओके इनका एडिशन ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। 2a हाँ 2a² + 2b² + 2c²। वो सब करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही लिखना है। बस ऐसे लिखोगे और ये बाकी कैंसिल नहीं हो रहा है, हाँ तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यस सर अच्छा मैंने खोल दिया था सर उसमें कंफ्यूज हो गया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्लियरली है, तो दैट मीन्स ऑल थ्री कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ 1 हैज टू बी पॉजिटिव। So that means any one of them has to have a real root for sure. हम्म Okay. सर एक डाउट है Hmm. सर मतलब ऐसी क्वेश्चन मिल गई जिसमें a² + b² + c² - ab - bc - ca पॉजिटिव प्रूफ करना हो तो ये कैसे करेंगे? That is super easy. Multiply and divide by 2, and then it will become sum of perfect squares. This thing inside is a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. This quantity is basically half of this sum of three squares. पॉजिटिव ही रहेगा गॉट इट। Okay. Finish the exercises. If you have not done the exercises, there is not enough time to keep doing the same chapter. We have to move on in life. जिसने भी नहीं किया है एक्सरसाइज खत्म करो, अगली एक दो क्लास में खत्म करना है इस वीक के अंदर। ठीक है अगर सर। खत्म नहीं करोगे तो फिर आई विल एनीवे मूव ऑन, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर एवर। सो 2 classes max is left. One class will be on Wednesday, one class might be on Friday, and that's it for quadratic equations. So if you have doubts, you need to ask in the next 2 classes. हम्म If you don't have any doubts by then that is up to you. After that, I will be moving to sequence and series. Okay, यस that's सर। all for now. I'll see you in the next class. सर Hmm. हेलो। Yeah, tell me. हाँ सर वो थोड़ा वो पूछा था कि सर वो लाइक नंबर थ्योरी कहाँ से स्टार्ट करें जो आपने बुक रिकमेंड कर दी वहां से ही? हाँ, वो बुक सही है। जोसेफ ठीक है सर। सिल्वरमैन की बुक इजी है। हम्म You can मैं उससे understand it from there. थ्योरी हो जाएगी ना सर मतलब क्वेश्चंस करने के लिए? Theory उसमें more than enough है. ओके सर। But obviously problem practice is a different thing. Solving हम्म problems requires a lot of practice, and you need to do many other places as well to be good at it. But theory, enough theory is there, no more is required. ओके सर। Okay, थैंक fine. यू।